Oh yeah, alright guys, good morning, and it's 11 of morning. Uh, Today we're going to make a video about V-Day lighting, nothing else, okay now. So I just have already created one 3D model over there. मेरे पास पहले से एक 3D मॉडल है और मैं इस पे 3D लाइटिंग करने वाला हूँ और मेरे पास अभी यहाँ पे कुछ लाइटिंग है नहीं, बस टेक्सचर एंड मॉडल फाइल है। एंड ये थोड़ा सा ना हेवी फाइल है। मैंने हेवी फाइल लेने का सोचा इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है मेरा कि भाई सर मेरा तो कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही लो है, तो मैं एक हेवी फाइल को कैसे रेंडर करूँ। एंड सबसे बड़ा इशू क्या होता है ना कि रेंडरिंग टाइम का इशू होता है। लाइक हम लोग जब रेंडर करते हैं ना, इट विल समटाइम टेक 2 hours 3 hours एंड ऑल दैट फॉर ए सिंगल फ्रेम। सो यार एक वॉक थ्रू बनाने के लिए तो भाई सालों लग जाने हैं ना फिर। तो मैं थोड़ा बहुत कुछ सेटिंग्स दिखा दूंगा जो मे बी मेरे फाइल में कुछ चीज़ें, मे बी मेरे फाइल में कुछ अलग सा होने वाला है, तुम्हारे फाइल में कुछ अलग रिएक्ट करने वाला है। बट बिलीव मी द सेटिंग जो तुम अभी मैं जो दिखाऊंगा ना, बेसिकली वो यूनिवर्सल है, तो तुम कहीं भी यूज़ करो। बट क्या ना, इस ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटल, ठीक है ना। तो कॉपी मत करो, डोंट रट्टा मत मारो। जितना हो सके ना इसको समझने की कोशिश करो, क्यों कैसे क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो ये मेरा सीन है, मैंने एक कैमरा सेट करके रखा है, सेट एक कैमरा। मैं मॉडलिंग का कुछ दिखाने नहीं वाला हूँ, ठीक है ना। दिस इज ऑल मॉडल फाइल एंड ऑल दैट एंड शेडेड व्यू सही है। और मैं वीरे यूज़ करने वाला हूँ। तो एट फर्स्ट मेरा जो पहला काम होता है वो क्या करूँगा ना, आई जस्ट गो फॉर माई रेंडर सेटअप एंड यू कैन सी द रेंडर सेटअप इज ऑलरेडी वीरे। अगर नहीं है तो प्लीज़ ऐसा ही रेंडर में आ जाना, यहाँ पे वीरे कर लेना, ठीक है ना। एक्टिव शेडेड यू कैन लीव इट, डोंट नीड राइट नाउ, ठीक है ना। आई एम एट ऑफिस, तो तुमको थोड़ा बहुत नॉइज सुनाई दे सकता है बाहर, ओके, जस्ट कंसिडर दैट। ओके, सो दिस द आउटपुट सेटिंग दैट आई एम गोइंग टू चेंज। आउटपुट सेटिंग यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, तो यू कैन यूज अ 720 और इफ यू लाइक 1080 यू कैन गो फॉर 920x1080 का भाई मुझे चाहिए रेंडर आउटपुट। और मैं क्या करता हूँ ना, बेसिकली मैं हर बार 920x1080 में रेंडर मारेंगे तो भाई शाम तो हो जाएगी, फिर भी अपना काम ख़त्म नहीं होगा, बिकॉज मुझे बहुत सारा टेस्ट रेंडर मारना पड़ेगा लाइट का इंटेंसिटी देखने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं जितना हो सके ना कम रेजोल्यूशन में, जहाँ पे मुझे बस प्रीव्यू चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई जस्ट गो फॉर प्रीव्यू। और मैंने से पहले से ना वीडियो का कुछ सेटिंग करके रखा है जो मैं तुम लोग को दिखाने वाला हूँ। प्लीज़ एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। द फर्स्ट थिंग, गो टू टैब वीडियो, ओके। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड इमेज सैम्पलर, ओके। इमेज सैम्पलर जैसे रखोगे ना उसके हिसाब से ये इमेज को सैम्पलिंग करता हूँ। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है ना एडप्टिव डीएमसी कुछ लिखा हुआ है, तो आई जस्ट गो फॉर फिक्स्ड एडप्टिव और डीएमसी एंड फिक्स्ड एंड एडप्टिव सब डिविजन में ना अंतर बहुत सारा खतरनाक सा अंतर है। यहाँ पे देखना, जब भी हम लोग चेंज करते हैं यहाँ पे तुम्हारा मिनिमम एंड मैक्सिमम डिवीजन आ जाता है जब ये एडिट डीएमसी करते हो। सेम सब डिविजन में करते हो तो यहाँ पे भी तुम्हारा जस्ट वेट स्लोडिंग तो यहाँ पे भी सेम थिंग, तुम्हारा मिनिमम रेट एंड मैक्सिमम रेट का आ जाता है। तो ये क्या ना, एडिटिव जो होता है ना वो बेसिकली ना कैलकुलेट करता है कि जहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं है, द ब्लैंक एरियाज, हर जगह पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, कुछ कुछ एरिया कभी कभी ब्लैंक होता है। तो इट व्हाट यू कैन डू, इट गोइंग टू जहाँ पे नहीं है वहाँ पे भाई एक सैम्पलिंग मैक्स सैम्पलिंग यूज़ करेगा, जहाँ पे ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स मिलेगा तुमको वहाँ पे वो 4 तक सैम्पलिंग यूज़ करेगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। एडिट डीएमसी फिक्स्ड जो होता है ना वो क्या होता है कि भाई मैं फिक्स्ड बोल दिया कि सभी जगह पे ना तुमको बस एक करना है, चाहे वो ब्लैंक हो या फिर चाहे वो ऑब्जेक्ट से भरा हुआ हो, कैसा भी हो तुमको वन सैम्पलिंग यूज़ करना है। यू कैन यूज़ मोर बट फॉर प्रीव्यू पर्पस आई यूज़ ओनली वन एंड बिलीव मी फॉर मी इट्स सफिशिएंट, मुझे नहीं चाहिए उससे ज़्यादा। आफ्टर दैट समथिंग कॉल्ड एंटी अलाइजिंग फिल्टर्स। तो बाय डिफॉल्टली इज एरिया फिल्टर, ओके। यू कैन take that filter that I take a Cutmel room basically, ठीक है ना। or you can say another filter like I use triangle filters, let me just find those triangle filters for crispy and harsh जो looking होता है ना। क्या होता है, filters is just like your कैमरास फिल्टर्स, ओके ना। तो क्या होता है ना कि हम लोग फोटो खींचते हैं उसको थोड़ा सा ब्यूटीफाइंग करने के लिए क्या कहते हैं फिल्टर यूज़ करते हैं। तो देखना जब भी मैं कटमल रूम यूज़ करता हूँ ना उसका ना क्या करने वाला है वो यहाँ पे दिखा देता है। तो उसने बोला है कि 25 पिक्सल्स को फिल्टर करेगा, एजेस को है ना थोड़ा सा इन्हांस इफेक्ट वो प्रोवाइड करने वाला है। सेम थिंग इफ़ यू गो फॉर क्यूबिक इट विल लिटिल बिट, क्या होता है ना कुछ कुछ चीज़ें ना ब्लर करना चालू हो जाता है। तो filters are making blur, so if you don't want any kind of filters, you want a crisp clear result, तो please use those
कटमल रोम और अदर ट्रायंगल फिल्टर, सो आई यूज़ दैट पर्टिकुलर फिल्टर, लाइक दैट फिल्टर. ओके, बाकी चीज़ें में ऐसे कुछ मैंने कुछ छेड़खानी किया नहीं है. इन्वायरमेंट इज़ 000 ब्लैंक. ओके ना. एंड कलर मैपिंग बेसिकली यहाँ पे लीनियर मैप मल्टीप्लायर रहता है. I just go for Reinhardt. You can use exponential. Sorry, my mistake. Okay, now, or you can go for Reinhardt also. So I use Reinhardt, and this is the settings. You can put it as it is on your file if you like to, और तुम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो. बेसिकली कलर मैपिंग, इससे क्या होता है ना, जो कभी कभार ना कलर्स आर बिकम लिटिल डल और white doesn't look like white and all that, so you can change that particular value, gamma value and burn value and multiplier values. That basically कभी कभार ना ओवर एक्सपोजर दिखता है, बर्न दिखता है, तो वो ठीक करने के लिए वी यूज़ दैट पर्टिकुलर थिंग्स. ओके ओके, लेटर ऑन, ठीक है ना. अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ अगर छूट रहा है तो मुझे बाद में हम लोग कवर अप कर लेंगे, ठीक है ना. इट्स नॉट अबाउट योर सेटिंग अप, वी टॉक अबाउट लाइटिंग टुडे. तो वी आर जस्ट लुकिंग एट थोड़ा बहुत जो भी सेटिंग का है, जो मैंने किया है एक्चुअली इसमें चेंजेस. मैंने कैमरा में कुछ किया नहीं है बिकॉज आई एम यूजिंग स्टैंडर्ड कैमरा, तो मैंने कैमरा में कुछ चेंजेस किए नहीं है. तो दिस इज माई ओनली वीरे. इन इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन दिस लिटिल बिट चेंजेस. आई जस्ट टर्न ऑन माई GI. ओके, by default is off. You can turn off GI. You can go for incandescent map and light cache, जो by default रहता है multiplier 1 by 1. ओके, incandescent map पे यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे तुम्हारा ना current preset मैंने low करके रखा है because I'm going to render output of test renders, so I'm not using those high settings because it going to take too much time, and I'm using a low configuration PC. और मैं चाहता हूँ कि भाई जितना कम में मेरा काम निकल जाए उतना बेटर हो, ठीक है ना. ओके, सो आई जस्ट गो फॉर लो. यू डोंट गो फॉर वेरी लो, लो इज सफिशिएंट. तो इट ऑटोमेटिकली चेंज द सेटिंग्स व्हाटएवर इट इज. आई एम जस्ट लीव इट एज इट इज. ओके, आफ्टर दैट देयर समथिंग कॉल्ड लाइट कैश सेटिंग. यहाँ पे तुम यहाँ पे आ जाओ, यानी यहाँ पे ना तुमको सब डिवाइड मिलेगा. तो आई यूज़ 100 ऑफ दैट. You can use a 500 or more than that, but believe me, जितना तुम सब डिविजन बढ़ाते हो ना, it will take lots of time and I don't want to waste my time, you know. चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना. तो इतना कुछ कर लेना. यहाँ पे जो भी सेटिंग्स है पासेस बेसिकली जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे थे वहीं पे. सैम्पलर साइज आई जस्ट गो फॉर 0.02. ओके, नथिंग एल्स. ऑल सेटिंग में यहाँ पे आ जाओ. यहाँ पे एडिटेड DMC सेटिंग है, DMC सैम्पलर्स है. आई डोंट वांट टू यूज़ दैट पर्टिकुलर थिंग. सिस्टम सेटिंग्स है यहाँ पे, रे ट्रेस एंड ऑल दैट. आई डोंट वांट टू यूज़ दैट. जो बाय डिफॉल्ट है मैंने वैसा ही छोड़ दिया है. आई डोंट थिंक सो कि मैंने इसमें कुछ चेंज किया है, ठीक है ना. ओके, आई एम फाइन. रेंडर एलिमेंट पे मैंने कुछ वीरे राइट कलर दिया है. मैंने इसको नहीं चाहिए, मैंने बस रेंडरिंग पर्पस के लिए रखा था. आई जस्ट डिलीट दैट. तो नथिंग, नो चेंज. ओके ना, फाइन. बस इतना पहला करना है, ठीक है. ओके, तो मैंने आई थिंक मैंने सेटिंग चेंज की. ओके, आई जस्ट यूजिंग अ लो रेजोल्यूशन. लेट मी जस्ट गो एंड क्या है ना, मैं तुमको ना मेरा सेटअप दिखा लेता हूँ कि मेरा सेटअप कैसा है. दिस इज माई सेटअप. आई जस्ट क्रिएट वन इंटीरियर दैट फुल ब्लॉक. ओवर देयर इज द विंडो. ओके, एंड यू माइट बी थिंक व्हाट द हैक इज दैट. तो दिस इज नथिंग. दिस इज बेसिकली अ मैप. इसमें मैंने एक बॉक्स दिया हुआ है. बॉक्स पे मैंने ना एक मटेरियल यूज़ किया, दैट्स कॉल्ड वीरे लाइट मटेरियल. लेट मी जस्ट फाइंड दैट मटेरियल स्लॉट. Yep, this one actually I used that one Vray material. So you can see this is nothing, this is just an environment. ये मैंने Vray light material यूज़ किया है. Intensity 1 मैंने इसके ऊपर एक मैप डाल दिया है. ये क्या है ना, नथिंग. ये क्या है, क्या सिटी का एक फ़ोटो है जो ब्लू कलर का स्काई है, और मैं नाइट सीन बनाने वाला हूँ. तो आई जस्ट यूज़ दैट पर्टिकुलर सीन फॉर माई इन्वायरमेंट. तो आई डोंट गोइंग टू यूज़ एनी फोटोशॉप एंड ऑल दैट. आई एम गोइंग टू यूज़ दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट जो मेरा लाइट मैप, या तो थोड़ा बहुत लाइट तुमको एलिमिनेट होते दिखेगा. आई जस्ट प्रेस C फॉर माई कैमरा and this is my camera view, and I just hit a render, a simple render, and it will take around maybe 10 to 15 seconds. Let's wait. Just wait, because this is a low configuration PC, so not so fast. So this is how it look. तो अभी बोलोगे सर यहाँ पे कैसे लाइट्स आ रहे हैं. तो नथिंग, मैंने यहाँ पे लाइट मैप दिया था, दैट्स वाई यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत लाइट दिखेगा. एंड ये जो एरिया है ना, आई जस्ट यूज अ सेल्फ इल्यूमिनेशन, नथिंग एल्स. ओके, दोज आर माई सेल्फ इल्यूमिनेशन ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा येलोइश सेल्फ इल्यूमिनेशन यूज़ किया, जो इंटीरियर्स में होते हैं, फॉल्स सीलिंग्स के ऊपर जो होते हैं लाइट्स हम लोग जो यूज़ करते हैं, ठीक है ना. ओके, दोज आर माई नॉर्मल कैन लाइट्स जो होते हैं, और सीलिंग लाइट भी बोलते हैं. कैन टाइप, कैन जैसा दिखता है, राउंडिश सिलेंडर जैसा दिखता है, जिसमें मैंने बस सेल्फ इल्यूमिनेशन डाला है. तो यू कैन सी देयर इज नो लाइट इंफॉर्मेशन इन माई सीन.
Now before I go for light, there's a two type of light, like I said always. One is called you say artificial light, one is called natural lights. Now what is artificial and natural lights? Natural light अगर मैं night का बात करूँ is only moonlight. Okay, moonlights जो होता है basically जो natural source of light, तो moon का बोलो या फिर environment का light जो होता है. Artificial lights are basically your bulbs and जो बाकी जो चीज़ें होते हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स एंड ऑल दैट जो होते हैं वो आर्टिफिशियल लाइट्स होते हैं. देयर इज वन थिंग अगेन, और एक चीज़ होता है दिस का अननोन सोर्स ऑफ लाइट. व्हाट इज अननोन सोर्स ऑफ लाइट? नाउ वी नो देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट्स, राइट? दिस लैम्प्स एंड दिस लैम्प एंड दोस कैन लाइट एंड दिस विंडो इज अ सोर्स ऑफ लाइट. वी नो अननोन सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है कि सोचो या पीछे, इसके पीछे या फिर ये गेट थोड़ा सा खुला हुआ है तो यहाँ से लाइट आ रहा है, तो मे बी इसके पीछे कोई लाइट जल रहा होगा जो अननोन सोर्स, जो मुझे दिख नहीं रहा है पर वहाँ से लाइट आ रहा है, मुझे पता चल रहा है. दिस इज कॉल्ड अननोन सोर्स ऑफ लाइट. ओके, तो समटाइम वी यूज दैट पर्टिकुलर लाइट्स फॉर क्रिएटिंग a dramatic effect and all that. Okay, so we're going to talk about later on. Okay, I just hit P for my perspective view. I just zoom out a little. Okay, and I'm going to create one light. So I just go for create panel and go for light. There's a three type of light we know: photometric, standard, and Vray. I start with my Vray light. I'm going to create a moonlight with the help of a Vray light. Okay, I just create a Vray light. Now there's a setting of a Vray light. We'll talk about later on. What I'm gonna do, I just go over there and change my view, and I think I'm looking for not that one. I'm looking for left view. I spell L, and let me just go for wireframe. Okay, now we know this is my full interior. Just full screen that. Oh, it's too slow. Okay, and this is my window, right? This green, you can see that green thing. What I'm gonna do, I just click and drag one light. Shit, just wait. Video light, and I just click and drag one light. Right, this is my video light, and it's too much slow actually. Nothing, just go to configuration. Please change it to type to plane, and this is the multiplier options. Okay, and I just hit P for perspective view. I can see my light create just inside of my house. Okay, now you can see, oh shit, just wait, I just changed that one. I can see my light जो है ना, मेरा लाइट जो मैंने क्रिएट किया ना वो घर के अंदर क्रिएट हो गया, तो मुझे बाहर चाहिए इस तरफ कहीं पे. तो ये देखना मुझे मूव करने में ना बहुत तकलीफ हो रहा है. तो देखना हाई पॉली मेश में ही कॉन्फ़िगरेशन कोई प्रॉब्लम होता है कि अगर लो कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा पीसी होता ना, तो तुमको चीज़ें मूव करने या फिर थोड़ा सा हैंडलिंग करने में बहुत इशू होता है. व्हाट आई कैन डू, आई जस्ट गो फॉर डिस्प्ले पैनल and I just turn off all of my geometries, so you can see now I can easily move thing. And what I gonna do, मैं इसको लाइट को ना पहले से ना थोड़ा सा ना आइडिया में जितना मूव होना है वो कर लेता हूँ, and then again turn on my geometry. You can see थोड़ा सा और जाएगा maybe. So after that I just move that until I satisfied. Okay, I'm fine with that. ठीक है ना, मेरा लाइट यहाँ पे मैंने सेट कर लिया. I just turn off my geometry. So this is my light. I just set up. Let's just set up my light. I just select my light. Go to modify. एट फर्स्ट मेरा प्लेन होने को है ये, ठीक है ना, प्लेन लाइट, ये प्लेन. अगर तुम चेंज करते हो यू कैन टेक अ डोम वन, यू कैन टेक अ स्पीयर वन, यू कैन टेक अ मेश वन, ठीक है ना. तो आई जस्ट टेक अ प्लेन वन. ओके, दिस इज अ प्लेन लाइट. ओके, प्लेन में भी मेरे बहुत सारे ऑप्शन जाता है लाइक, ठीक है ना. देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटेंसिटी, तो आई जस्ट go for 30. I don't want 30 of intensity, it's too much. Let's go for 15, a less intensity. Like I said, it's a moonlight. I just change the color of the light. There's over there. I just change by using this color thing and just use a bluish color or cyan. Maybe this one. Yeah, I'm happy with that. Okay. This is my color mode. Okay, mode is color. You can change also temperature. Now when you go for temperature, is actually work on kelvins. Okay, now if I talk about Kelvin, is how it work. A low of Kelvin, जितना Kelvin कम होएगा वो उतना ज़्यादा येलोइश लाइट शो करता है, प्रोवाइड करता है. जितना ज़्यादा Kelvin होएगा उतना वो वाइट लाइट प्रोवाइड करता है, ब्लू लाइट प्रोवाइड करता है. एंड लेट मी जस्ट शो यू. इफ आई गो फॉर टेम्परेचर एंड आई जस्ट सेट अप 2000 of Kelvin, believe me, it going to my
full reddish light, okay. But if you say it will be my 20,000 of Kelvin, it will be go for too much bluish light. So that how it work Kelvin, okay. It's basically temperature का जो unit होता है, this is basically Kelvin. तो I don't going to use that particular thing, I use my default. तो तुम अपने हिसाब से ना color choose कर सकते हो, you don't need to worry about. Alright, okay. So let's hit C again and just turn on all my geometries. Let's see, okay. And before that let me just turn out something like color. ठीक है चलो भैया, okay. Cast shadow, obviously I'm going to invisible that, okay. And others जो भी parameters है सभी को छोड़ दो, just make invisible that light. Subdivision let it happen, subdivision जितना है वैसे रहने दो इसको, बाकी कुछ भी चीज़ में छेड़खानी नहीं करना है. Just came on your display and turn on all your geometries, open up and I am in camera view and I just hit a simple render. Let's see. तो ये मेरा पहला कुछ दिख रहा था without any light. Sorry, I'm just use one light and let's see what it look like. So let it happen. So maybe just यहाँ से थोड़ा सा bluish light आते हुए मुझे दिखेगा, तो that's how it looks. Okay, so you can see there's a light coming out from there. Actually यहाँ से light आ रहा है and it will be illuminate my area. Now if you think that's too much, you can change the intensity of that light, but I think this yes, this is too much. I think I go for 10 or 12 or something. Okay, I'm fine with that. Let me just अभी छोड़ दो, अभी इसको रहने दो, ठीक है ना. What I'm gonna do, मुझे पता है कि क्या करना है. So I just select the light, go to modify panel, just wait. It's so laggy. Yep, come on. Okay, and I just change my intensity up to like 10 or something, or maybe 13. I have 13 is fine for me, and I just save as that file because I don't want to भाई कहीं crash हो गया तो भाई कभी मिल जाना चाहिए. Let's go for save as and let's save as that file. Just wait, it's a heavy one. You can see my render time is 27 seconds. Let's save as like 2 or something. Let me save that. Okay, I'm fine. Now I just implement one light that's actually my natural light. Now I go for artificial lights, that for my candle lights and ये जो मेरे lamps यहाँ पे है and ये जो है यहाँ पे जितने भी lights हैं, I'm going to use those particular things. So what I'm gonna do, I just use a simple Vray light for those lamps and all that. ठीक है, मैं क्या करता हूँ, just let me do one thing. I just go for all. I select only the light, only the lamp, okay, and I just isolate that. So I don't want to work on entire thing, तो बहुत laggy हो जाता है. I just want one only lamp, so I just create one Vray light. Just create one Vray light. This is my Vray light. ठीक है, पोजीशन कहीं पे भी आने दो उसको, कोई इशू नहीं है. प्लेन के जगह इसको बोल दो स्पीयर लाइट. ओके, नाउ लेट्स रिमेंबर इन Vray लाइट का रेडियस ना बहुत मैटर करता है. तुम जो भी लाइट का रेडियस डाल रहे हो ना, इज बेसिकली मैटर ऑन Vray. तो अच्छा, लेट मी जस्ट प्लेस दैट लाइट. या आई एम फाइन विद दैट. ठीक है ना, ये जो रेडियस है बहुत बड़ा है, तो आई जस्ट वांट टू चेंज द रेडियस एंड always obviously I have to change the intensity and the color also. So at first go for color and I want a little warm toning color like yellowish something, थोड़ा सा yellow. इंटेंसिटी जो मूनलाइट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होएगा, तो इसको फॉर 30. एट फर्स्ट लेट्स चेक, अगर गलत होता है तो हम लोग इंटेंसिटी इसका कम कर देंगे. देयर इज द रेडियस, बिलीव मी बाय डिफॉल्टली तुमको इसका 0 मिल सकता है. बस इंक्रीज द रेडियस जितना तुम्हारा बल्ब का साइज होता है, और यू कैन जस्ट गो फॉर अ लिटिल बिट, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा रख सकते हो, कोई इशू है नहीं. बट मैं ओवर नहीं दे देता, लाइक इससे बाहर मत जाओ. ओके ना, ट्राई टू मेंटेन दैट टाइप ऑफ शेप एंड ऑल दैट. ठीक है, ओके. नॉलेज में जब भी तुम ऐसा टाइप का कुछ लैम्प बनाते हो ना, इसका मटेरियल बहुत वैरी करता है. तो इसका मटेरियल जो भी तुम पुट कर रहे हो ना, अच्छा मटेरियल पुट करना. लाइक इफ़ यू यूजिंग अ मेटल रे, प्लीज़ यूज रेड ट्रेस मटेरियल एंड गो फॉर ट्रांसलूसेंट एंड ऑल दैट. ठीक है ना, सेम थिंग Vray में कर रहे हो तो तुमको थोड़ा बहुत इसका ऑपेसिटी एंड रिफ्रैक्शन के साथ खेलना पड़ता है, ताकि तुम्हें एग्जैक्टली जो लैम्प का फीलिंग है वो आना चाहिए. ओके ओके, आई एम फाइन. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट एनीथिंग. मैंने इसका
लाइट सेटिंग आई होप चेंज कर दिया हो. देखता हूँ एक बार फिर से रीचेक कर लेता हूँ. यस आई नीड अ स्पीयर लाइट, कलर इज बी समथिंग लाइक दैट, मल्टीप्लेयर इज 30, आई जस्ट चेंज रेडियस एंड इट शुड बी इनविजिबल, ब्ला 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 ब्ला. बाकी सारे सब चीज़ें ठीक है. जस्ट I don't want to isolate that. Let me just go to my top view. And what I'm gonna do, I just instance that light because मेरा दो लैम्प है and I'm going to instance that light. Just wait. Let's select that lamp again. Okay. It takes too much time actually. Okay, I just isolate that. So select that one and shift and drag and go for instance because मैं कुछ भी चेंज करूँगा एक लाइट पे तो मैं दूसरे लाइट पे मुझे इफेक्ट चाहिए. तो आई डोंट वांट टू, मतलब मैं दो बार मैं चेंज नहीं करने वाला, मैं इतना मगजमारी नहीं करने वाला हूँ. ओके एंड आई जस्ट प्रेस हिट सी. दिस इज माय कैमरा व्यू. आई जस्ट out of my isolate view and I just hit render and let's check it out. So this is the first thing. Okay, and I think it's going to eliminate my area. तो you can see थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखेगा पर जब तक रेंडर पूरा नहीं हो जाता तब तक हम लोग को कुछ दिखेगा नहीं है. चलो होने दो. यू कैन यूज ऑल्सो रीजन रेंडर. अगर तुम्हारा बहुत टाइम लग रहा है, यूजिंग टू मच लो कॉन्फ़िगरेशन मशीन, यू कैन यूज अ रीजन रेंडर. बट आई थिंक ना कि काफ़ी है यार, इतना थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा उतना भी टाइम नहीं लगेगा. तो यू कैन सी ओके दैट्स लुक गुड है. तो ये इलिमिनेट हो रहा है, ठीक है ना. इफ़ यू वांट टू मच ऑफ एलिमिनेशन और तुम्हें लग रहा है कि रेडियस ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा बहुत कम कर लो. थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाना है तो तुम इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो. ऑल अप टू यू बट आई एम फाइन विद दैट. आई डोंट थिंक सो मुझे चेंज करना पड़ा बिकॉज मुझे और भी लाइट ऐड करने हैं. बाद में अगर मुझे लगा कि इसका इंटेंसिटी बढ़ाना है तो हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है ना. ओके आई एम डन विद दैट. तो यू कैन सी हाउ ईजी इट इज़. बहुत ज़्यादा ईजी है, बस तुमको रेंडर सेटअप ठीक से करना पड़ता है एंड जो लाइट्स है ना उनका इंटेंसिटी थोड़ा बहुत मेंटेन रखना पड़ता है, नथिंग एल्स. ओके let's jump back again to top view and just wait. This is my top view and I'm going to start with chandeliers. जो है अपना chandeliers जो है उसमें जो lights है वो हमने put करना चालू करते हैं. Let me just wait, it's so laggy. Okay I'll just select that object model and I isolate that. Okay, this is my top view. What I'm gonna do, same thing, I gotta create one video light. And this is my video light. You can see is taking the previous setting जो मैंने इसका दिया था, as P जो previous उसका setting दिया था वही है. नीचे create हुआ, कोई बात नहीं भाई, इसको ऊपर ले लो, ठीक है ना. I just press Z for focus. You can see ये मेरा light जो है मेरा create हो चुका है. Sorry, I just press T for top view. Okay, and this is my light. I just place my light wherever it should be, जहाँ पे वो रहना चाहिए, ठीक है. चलो इसका थोड़ा सा सेटिंग अप कर लेते हैं. सेम थिंग इसका जो है, इसका ऑब्वियसली इनविजिबल होएगा. कलर सेम मैं थोड़ा सा येलोइश रखता हूँ. मल्टीप्लायर यू कैन चेंज दैट अप टू लाइक लैम्प्स. सैंडलियर्स उतने ज़्यादा ब्राइट नहीं होते, तो लेट्स गो फॉर 25 इज कन्वीनियंट फॉर मी. यू कैन गो फॉर 22, 23, 20 व्हाटएवर इट इज, डिपेंड ऑन योर सीन, ठीक है ना. ये मेरा सीन के लिए है तो आई जस्ट गो फॉर 25, ठीक है ना. and the setting is same. I don't want to change anything. Let me just go to the top view and you know what to do, right? क्या करना है, बस अपने को कॉपी करना है. कैसे कॉपी करना है, जस्ट कॉपी दैट एंड मेक श्योर यू आर यूजिंग अ इंस्टेंस ऑप्शन, ठीक है ना. कुछ नहीं है, बस इनमें तो हम माइड एक्चुअली कॉपी करने में. चलो बस कॉपी, 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 एज बोरिंग. एंड सेम थिंग जैसे हम लोगों ने लैम्प पे यूज़ किया ना, लैम्प पे भी जैसा कहानी था ना, सेम इसका भी वही कहानी है कि तुमको ना मटेरियल प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है. वरना ना वो जो इफेक्ट आता है ना, लाइट जो इससे भी लाइट जो इससे निकल के आएगा, मतलब जैसे ये सोचो कि ग्लास वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना. ऐसा कभी कोई इशू होता है, यू नो दैट तुम लाइट को सिलेक्ट करना चाहते हो एंड यू आर सिलेक्टिंग योर ऑब्जेक्ट. डोंट वरी, जस्ट चेंज दैट टू लाइट्स ओनली. तो इट विल ओनली सिलेक्ट लाइट्स, नॉट सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट. क्लियर ना. सो मटेरियल्स जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि मटेरियल के ऊपर ना बहुत चीज़ डिपेंड करता है. तो आई जस्ट प्रेस सी फॉर माई कैमरा, टर्न ऑफ माई आइसोलेशन एंड जस्ट हिट रेंडर. लेट्स चेक इट आउट एंड स्टार्ट एलिमिनेटिंग. ओके, you can see over there a little bit. I hope नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं उसके बाद. आने दो. Just wait.
लाइक आई सेड दिस इज रियली लो कॉन्फ़िगरेशन मशीन, तो लेकिन फिर भी इतने लो कॉन्फ़िगरेशन मशीन में अगर ये इतना झेल रहा है तो बिलीव मी तुम्हारा तो थोड़ा बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन तुम लोगे ही, तो जब तुम लोगे तो इससे ज़्यादा बढ़िया एंड ज़्यादा बेटर आउटपुट तुम निकाल सकते हो। लेकिन सी लाइट ऊपर जा रहा है छत पे, यस ऑब्वियसली जैसे नॉर्मली जाना चाहिए, द थिंग्स आर इल्यूमिनेटेड, ओके, एंड आई यूजिंग लो resolution of output because like I said low configuration machine okay now, तो चीज़ें are starting illuminating now, just people are happy with that, वाह क्या बात है भाई, हो गया भाई, हो गया भाई, ख़त्म हो गया यार, नहीं प्लीज़ डोंट एंड अप at that particular thing। अभी तो बस हम लोगों ने वीडियो लाइट ऐड किया है, तो वी गोइंग टू ऐड कैन लाइट, जो यहाँ पे लाइट्स है ना, वी गोइंग टू ऐड दोस लाइट फॉर illuminating other objects and all that, okay, let's start doing that, okay, so nothing, इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा ना, आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ अनदर लाइट, सो आई एम गोइंग टू यूज़ photometric light and video light combinations। Obviously you can put a video light also, but I'm going to use a photometric light, believe me that's not a bad light, that's a good light, always not use video light, you can use a composition of photometric and video lights, ओके ना, ऑप्शन है तो क्यों ना यूज़ करें भाई, ठीक है ना। आई जस्ट टेक अ फोटोमेट्रिक लाइट, ओके, व्हाट आई कैन डू एट फर्स्ट, आई जस्ट लेट मी जस्ट सेलेक्ट दैट फुल ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट सीलिंग वन, बिकॉज मैं सीलिंग पे लाइट ऐड करने वाला हूँ। लाइक आई सेड, मैं मेरा जब भी हेवी फाइल है तो ये मूव करने में थोड़ा सा लैग होता है। आई सेलेक्ट माई ऑब्जेक्ट, आई जस्ट ग्रुप दैट, एक्चुअली मैं ये पूरा ग्रुप किया हुआ हूँ, आई जस्ट आइसोलेट दैट, आई डोंट वांट टू चेंज दैट, आई जस्ट प्रेस पी फ्रॉम पर्सपेक्टिव, यू कैन सी, ओके। सो यहाँ पे भी कैन लाइट्स मैंने लगा के रखे हैं, तो यहाँ पे तो दिखने वाला है नहीं, मेरा कैमरा वहाँ पे जा नहीं रहा है, मुझे यहाँ पे लाइट्स ऐड करना है, ओके, 3x3x6, एंड आई एम ऑल्सो लाइक टू ऐड लाइट ओवर देयर, ओके ना। यहाँ पे मैंने कुछ बनाया नहीं है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे लाइट ऐड करेंगे। आई जस्ट टेक अ फ्री लाइट, आई गो फॉर टॉप व्यू एंड आई जस्ट ऐड वन लाइट ओवर देयर, ओके, यू कैन सी दिस इज माई लाइट। नाउ कभी कभार जब तुम लोग IES फोटोमेट्रिक लाइट यूज़ करते हो ना, व्हेन यू यूज़ फोटोमेट्रिक लाइट्स, इशू क्या होता है ना, जब भी तुम फोटोमेट्रिक लाइट में फ्री लाइट ले लो, टारगेट स्पॉट ले लो, जब भी क्लिक करते हो ना तो एक ऑप्शन आता है, जो मेंटल रे में आएगा या फिर तुम्हारा वीडियो में भी आता है कभी कभार, कि यू वांट टू चेंज द एक्सपोजर कंट्रोलर टू फोटोमेट्रिक लाइट्स, ठीक है ना। जब भी तुम फोटोमेट्रिक लाइट लेते हो ना, इट विल चेंज योर एक्सपोजर कंट्रोल। सो बेसिकली आई एम नॉट यूजिंग एनी एक्सपोजर कंट्रोल, गो टू रेंडर and hit environment, तो you can see there's a exposure control option by default। कभी कभार no exposure रहता है, कभी कभार ना it will change to MR photometric exposure controller, photographic, sorry not photometric is photographic exposure controller, okay ना। इसमें क्या होता है ना, जब फोटोग्राफी एक्सपोजर कंट्रोल होता है ना, यहाँ पे ना फोटोग्राफी के जितने ऑप्शन होते हैं, लाइक कैमरा ऑप्शन, लाइक यू हैव एफ स्टॉप, यू हैव अपर्चर, शटर स्पीड, ISO एंड ऑल दैट थिंग्स, ये तुमको मिल जाएंगे, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज दोज पर्टिकुलर थिंग, आई एम गोइंग टू यूज अ नो एक्सपोजर कंट्रोलर। बिलीव मी, ये जो एक्सपोजर कंट्रोलर है बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं, तो कभी मौका मिले तो मैं ये थोड़ा सा एक्सपोजर कंट्रोलर जो है उनको थोड़ा डिस्क्राइब करके कहाँ पे काम में आते दिखा दूंगा, बट नॉट नाउ बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम, बिकॉज वी आर रनिंग लेट, okay। So just over there, when you create a photometric light, go to options, and over there there's a lots of options over there, okay, not like V-Ray, you can use a template, 40 watt का बल्ब है भाई, 100 watt का बल्ब है, halogen है, blah blah blah, yes। So I want to turn on my shadow, by default is a shadow map, change it to V-Ray shadow, okay, and this is something light distribution type that you have to change that, oopsie, sometime might create issue, just take one, okay, तब दिखा नहीं रहा था, अभी दिखाएगा बेसिकली। चेंज दैट टू फोटोमेट्रिक वेब, ओके। नाउ व्हाट इज फोटोमेट्रिक वेब? दिस इज बेसिकली allow you to use one photometric file that is called IES file, okay, that really good actually। if I talk about IES, let me just give you a simple example of IES। क्या होता है ना कि जब भी हम लोग कैन लाइट, उन लाइट जो होता है सीलिंग्स पे जो लाइट होता है, इफ़ यू जस्ट सी देम, अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, तो उनमें ना एक स्पेक्ट्रम होता है बेसिकली। लेट मी जस्ट शो यू दैट पर्टिकुलर IES lighting, okay, or image, yeah, those things actually, you can see this particular spectrum on your can lights and all that, so you can't achieve these things by using normal lights, you have to use a IES file for achieve that particular thing, so that's why I'm going to use one IES file। I'll just change it to photometric web,
that allow you to use that choose a photometric file. Go to choose a photometric file. You can download a photometric file from web. Okay, now that's, believe me, is free of cost. So I already download 2 of photometric files. Where is that? It's in the, okay, where is that? Okay, I think I'll lose that. Just wait. Basically, yes, I found it. Yeah. So this is a IES file. You can see the spectrum over there. Okay, you can download that. If you don't have that IES file, you can mail me. I will send you that IES file. Take it up. So this is my IES file. I'm going to use this number 2 one. Okay, when you import IES file, believe me, it automatically change your Kelvin, it automatically change your intensity, it automatically change the area type, shadow type and all that blah 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 things. Is IES file में क्या होता है ना, सारे information दिए हुए रहते हैं. You don't need to change anything, it automatically change your things. Okay, so I just go for photometric web and this is my light. Okay, क्या करूँगा, इसको जहाँ पे ये रहने वाला है मैं वहाँ पे जाके इसको प्लेस कर देता हूँ. प्लीज़ 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 इसको ना फाइल के अंदर ना घुसेड़ मत दो, एकदम मतलब फाइल के अंदर मत डाल दो. ठीक है ना. कैन लाइट जो भी है तुमने यूज़ किया ना, जो भी तुमने कैन लाइट यूज़ किया उसका बस ना थोड़ा सा ऊपर, जस्ट एट लिटिल बिट टॉप, इसको प्लेस कर दो. यू डोंट नीड टू प्लेस इट, लेट मी जस्ट चेंज इट ओनली लाइट्स. यू नीड टू प्लेस इट इनसाइड दैट पर्टिकुलर थिंग. प्लस प्लीज़ थोड़ा सा ना ऊपर ही रखो. ठीक है ना. अगर अंदर चला जाता है ना तो वो शैडो लाइट ही पास नहीं कर पाएगा. ठीक है ना, लाइट ही पास नहीं कर पाएगा. एक्चुअली वो तुम्हारा फिर शैडो ना लाइट कुछ ही नहीं दिखेगा. यू थिंक कि भाई हो क्या रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग कभी कभार ना गलती से ना अंदर चला जाता है तो इससे इशू हो जाता है. आई जस्ट गो फॉर इंस्टेंस. ओके, एंड लेट मी जस्ट कॉपी देम. ओके, एंड आई सेलेक्ट 3 ऑफ लाइट. Let's copy that to another way. You can see that. ठीक है ना. I think it's easy. ऐसा कुछ खास है नहीं. ठीक है ना. और मैं क्या करता हूँ, इस 3 लाइट को फिर से कॉपी करता हूँ and I just use my angle snap and I just rotate that exactly to 90 degree and इनको मैं इस तरफ कहीं पे प्लेस कर देता हूँ. ठीक है ना. थोड़ा सा ऊपर जाएंगे मे बी. Let me just press F3 so I can see. Yeah, अंदर नहीं जाना चाहिए और थोड़ा सा इधर एंड मे बी थोड़ा सा मैं वॉल के थोड़ा सा बाहर रखता हूँ. एंड जस्ट हिट C and I just place all of the lights and let me just change one of lights intensity like I did in I just did one. क्या किया था ना हम लोगों ने इसको इंस्टेंस किया था तो कोई इशू होगा नहीं. तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिख रहा है कि केल्विन में ये 28 समथिंग है. तो आई जस्ट चेंज दैट. आई डोंट वांट इट रेडिश, आई वांट इट लिटिल बिट येलो. तो आई जस्ट गो फॉर 4000 और समथिंग. तो यू कैन सी अ लिटिल येलोइश, not too much radish and all that. You can use filter color also. Okay, okay, let's change the intensity to 25,000. Just wait, it's saving, it's auto saving. Okay, and I just hit exit my isolate mode and I hit C for my camera. In realistic view, let me just go for shaded view and I hit a simple render. Believe me guys, you have your file after that. ठीक है ना. तुम्हारा फाइल जो है ना start to looking cool after that. As a it's too much easy. Believe me, it take up to आधा घंटा लगा होगा भाई हम लोग को पूरा लाइट सेटअप करने के लिए. और अगर तुम्हारा गुड कॉन्फ़िगरेशन मशीन होता है तो इससे भी कम टाइम लगता है. प्लस प्लीज लाइक आई सेड, लाइटिंग इज ऑल अबाउट ना इज ऑल अबाउट योर सेंस ऑफ ह्यूमर. ठीक है ना, कि कहाँ पे कितना ज़्यादा लाइट होएगा, कितना उसका इंटेंसिटी होएगा, ये बस दिखाना होता है. अगर तुम किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो ना, बस क्लाइंट क्या मांगता है ना कि जो चीज़ जहाँ पे है वो चीज़ वैसा एग्जैक्टली देखना. तो यू कैन सी द IES लाइट्स ओवर देयर एंड इट लुक टू गुड ओवर देयर. ठीक है ना. You can see it rendering and it might be take up to 50 seconds to render. I don't think so it's too much time. ठीक है ना. And the result is quite good enough, not too much bad. Okay na. And obviously we're going to render it out in 1080 and let's check it out कि how much time it will take. Not 1080, maybe just go for 1280 by something. Okay, so you can see this is fast render and that's how it look like. I don't think so it's too much bad for beginners. It's good. Okay ना. तो पहला क्या है ना कि मॉडल ठीक से करो,
टेक्सचरिंग बढ़िया करो, ओके ना. आई यूज़ ओनली ब्राउन कलर स्कीम ओवर देयर, ब्राउन एंड ग्रे जो हम लोगों ने यूज़ किया यहाँ पे. वार्म टोन जो यूज़ किया हम लोगों ने, मे बी मुझे ना थोड़ा सा ना जो नाइट लाइट है उसको थोड़ा सा वाइटिश हो गया. लेट मी जस्ट डू इट अ लिटिल ब्लूइश, मुझे थोड़ा सा ब्लू करना है उसको, वो कर लेंगे हम लोग. रेंडर होने के बाद एक बार देख लो कहीं पे कोई इशू नहीं है तो कि भाई थोड़ा सा आई एस लाइट का ब्राइटनेस बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है. यू कैन सी द रिजल्ट इज क्वाइट लुकिंग गुड, ओके ना. लेट मी जस्ट चेंज समथिंग एंड लेट्स रेंडर इट अगेन. What I'm gonna do, I just change that light and I little bit bluish, convert to a little bluish. I change the IES file, maybe I go for 27,000 or something. Okay, now I'm happy with other things. Go to render setup. जब भी तुम फाइनल रेंडर करोगे तो प्लीज़ तुम्हारा जो है रेजोल्यूशन है उसको इंक्रीज़ कर लो, वीडियो में आ जाओ. यहाँ पे जो फिक्स्ड है इसको फिक्स्ड ही रखो. सब डिवीजन तुम बढ़ा सकते हो बट मैं बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना. आई एम हैप्पी विद दैट. तुम बढ़ा सकते हो अगर तुम्हें चाहिए तो. रेन हार्ट से ठीक आ रहा है तो रेन हार्ट से करो, अगर अदरवाइज यू कैन टेक एक्सपोनेंशियल basically, okay. You can take a rain heart, I use that, blah blah blah. You can change the gamma, okay ना, gamma actually. GI में कुछ है, incandescence मैप में है, preset low में क्या है, you can go for medium or you can go for high. Don't go for very high, take too much time. पर अगर तुम्हें ज़्यादा क्वालिटी का रेंडर है, एक इमेज रेंडर आउटपुट करना, यू हैव 2 डे, भाई बहुत टाइम है मेरे पास भाई, तो भाई फिर में कर लो, कोई इशू है नहीं. लाइक आई सेड, फिर यहाँ पे वीरे लाइट कैशे में आ जाना. लाइट कैशे में आके इसको 100 किया हुआ है सब डिविजन. यू कैन इंक्रीज दैट टू 500, 1000, व्हाटएवर इट इज़, जितना तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन है. आई लेट्स लीव इट एज इट इज़. मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ. Render elements don't need anything and I just hit a simple render. So you can see now my render is looking so large. Let it happen and believe me, we came back after when it rendered done. Okay, तो जब तक रेंडर हो जाता है तब तक हम लोग थोड़ा बहुत बातें कर लेते हैं ना. कुछ मैं एडवाइस एंड टिप्स दे देता हूँ. फर्स्ट थिंग, हो सकता है कि तुम्हारा एक एक रेंडर 2 घंटा 3 घंटा तक लग रहा है. यस ऑब्वियसली लगता है, लेकिन भाई क्वालिटी भी चाहिए. सीधी बात, 2 घंटा में तुमने रेंडर किया और तुम्हारा क्वालिटी कुछ नहीं निकला तो दैट्स हॉरिबल. ओके, सो मेक श्योर तुम पहले लो कॉन्फ़िगरेशन में रेंडर आउटपुट करो. रेंडर आउटपुट करके देखो कि ये कैसा आउटपुट आ रहा है. आफ्टर दैट यू जंप ऑन योर हाई क्वालिटी रेंडर. नाउ अभी तुम बोलोगे कि सर विच वन इज़ बेस्ट, इज एम आई गोइंग टू यूज़ वीरे और am I going to use mental ray? So believe me, both are good. ठीक है ना, दोनों में तुमने एक ही चीज़ अचीव कर सकते हो. अगर तुम मुझे बोलोगे कैन यू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर फाइल इन mental ray, I can execute for you guys. And believe me, the output is approx same. Now I really prefer V-Ray. Why? क्योंकि V-Ray में क्या है ना, V-Ray में ना प्रीसेट्स कुछ दिए हुए हैं. You don't need to tweak too much. Yes, obviously थोड़ा रेंडर सेटअप में थोड़ा बहुत तुमको ट्विक करना पड़ता है, बट जो लाइट यूज में है ज़्यादा ट्विक नहीं करना पड़ता. लाइक तुम अगर मेंटल रे का लाइट यूज़ करते हो या फिर स्टैंडर्ड लाइट यूज़ करते हो, यू हैव टू गो फॉर डीके एंड यू हैव टू गो फॉर लिटिल शैडो कास्टिंग, शैडो मैप, रेटेड शैडो, ब्ला ब्ला ब्ला, फलाना फलाना. बट इन अ वी-रे there's a preset, you just have to go what you want. You want cast shadow, yes, click on cast shadow, that's done. You don't need to choose one V-Ray map and all that blah blah things. If you want to go for DK or no DK, by default is DK on. But if you don't want DK, you can just go for no DK option. So it will be open up your no DK, just let it happen. It will be maybe take time of 5 minutes. So just wait for 5 minutes. I think it's convenient. चलेगा यार, 5 minutes तो बनता है अपने को, ठीक है ना. And like I said, मॉडलिंग ठीक से करो. टेक योर टाइम विथ मॉडलिंग. जो भी तुम मॉडल बना रहे हो, बिकॉज ना क्या ना, इन दी एंड जब रेंडर आउटपुट होने वाला है ना, तो तुम्हारा टेक्सचर और मॉडल के ऊपर ही तुम्हारा लाइटिंग डिपेंड करता है यार. तुम अगर मॉडलिंग ठीक से नहीं करोगे, बेसिक मॉडलिंग है, तो तुम मतलब बड़ा सा रेंडर आउटपुट कैसे मांग रहे हो या अच्छा खासा कैसे हो सकता है, ठीक है ना. तो मॉडलिंग ठीक से करो. पुट सम एलिमेंट्स ऑब्वियसली. एंड सम पीपल से भाई why don't we download all the particular things? Don't, I just say don't, please. Try to create your own things. You can create your own galleries and all that. You can download some of the things. Obviously तुम लाइटिंग के लिए थोड़ा बहुत किसी चीज़ों से डाउनलोड कर सकते हो, not a issue. But create your own. That's good for you actually. Being creator, you know, like that, to create own things. And this is a simple lighting. You can say as a tutorial. I can say as a just technique that I use basically for my interior and all that. I used to teach my students that way. Okay now,
look, there's a different way to achieve a goal. Like I said, haddi kutta and wall, sorry, that's the code language. Okay ना, तो there's a different way to achieve your goal. There's a different way, तो तुम कहीं से भी जा सकते हो. ऐसा नहीं है कि मैंने जिस वे पे दिखाया वही दिस इज़ द बेस्ट वे, इसी में जाना है, हमेशा यही करना है. नहीं, यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड यू कैन फाइंड योर न्यू वे, योर ओन वे, एंड यू कैन सी ऑन दैट. यू कैन सी द रेंडरिंग इज क्वाइट गुड इनफ, नॉट बैड टू मच, ठीक है ना. बट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत नॉइजेस एंड दिख रहा है मुझे, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग टू मच ऑफ सैम्पलिंग ओवर देयर, ठीक है ना. मे बी बहुत ज़्यादा सैम्पलिंग यूज़ करूँगा तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लिखेगा, लेकिन क्या होएगा ना, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है. तो आई डोंट वांट टू use that much of time. I want simple render, and believe me, for preview purpose, अगर तुम preview के लिए ये देख रहे हो, preview के लिए कर रहे हो, तो this quite good enough. You don't need to worry about those particular things, ठीक है ना. तो वो हो जाता है. तो you can see the IES light spectrums over there. ओके ना. अभी अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई थोड़ा बहुत डल लग रहा है, इधर थोड़ा सा लाइट चाहिए, तो you can use a fake light, और you can say बीच में ना 2-3 लाइट्स तुम ऐड कर सकते हो for illuminating your whole scene. ओके ना. ऐसा नहीं है कि भाई जहाँ जहाँ पे लाइट लगना है वही पे लाइट लगाना है. यू कैन चीट इज़ ऑल ऑफ टू यू. तुम्हारे हाथ में है पूरा का पूरा. यू कैन चीट विथ योर लाइटिंग थिंग्स एंड ऑल दैट. थोड़ा बहुत तुम फेक लाइटिंग जो है यूज़ कर सकते हो. एंड ऑल, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि मटेरियल एंड मॉडलिंग एंड टेक्सचरिंग डिपेंड ऑन योर लाइटिंग. अगर मॉडलिंग ठीक होता है, टेक्सचरिंग ठीक होता है, तो लाइटिंग को बढ़िया आना ही है, ठीक है ना. एंड वीडियो में अगर तुम रेंडरिंग करते हो तो बहुत ही कम टाइम होता है कि हम लोग को बहुत ही गंदा रिजल्ट मिलता है. मैक्सिमम टाइम इज़ रियली गुड रेंडर, ठीक है ना. एंड इफ़ यू यूजिंग अ गुड रेंडर सेटिंग एंड ऑल दैट, रेंडर सेटिंग को एक बार दोबारा देख लेना, थोड़ा बहुत वहाँ पे R&D करना, थोड़ा सा रिसर्च कर लेना. अगर मैं किसी पार्ट छूट रहा है, प्लीज़ लेट मी नो कि किसी कोई अगर मेरा पार्ट छूट रहा है, आई विल डेफिनेटली teach you that particular thing. And the best part about V-Ray now, when you render in V-Ray now, the white looks so white actually. What that mean? White looks so white. Actually, the white is look pure white. When I render in a mental render, it came with a little bit of grayish tint that I have to repair in after that in a Photoshop and all that. But if I talk about V-Ray, so sometimes I don't need to work on Photoshop. But for me this is fine. But if you want a look a little bit different, थोड़ा बहुत तुमको tweak करना है, तो तुम Photoshop में फाइल इमेज जो रेंडर आउटपुट आ रहा है उसको तुम Photoshop में लेके जा सकते हो, and you can tweak that file easily. You don't need to worry about those particular things. Hope you like that video, and thank you for watching. I hope भाई कुछ नॉलेज हम लोग गैदर कर पाए इस वीडियो से, ठीक है ना. एंड दिस इज़ माई थर्ड वीडियो, तो थोड़ा बहुत आ जाता है तो प्लीज़ थोड़ा बहुत माफ़ कर देना यार, ठीक है ना. तो दिस इज़ माई फाइल. Okay, if you working on some file, if you like to share your file with me, obviously always welcome. इसको देख के अगर तुम इंस्पायर हुए हो, तुमको अगर खुद का एक फाइल क्रिएट करना है, फाइल क्रिएट करो. ऑब्वियसली मेल मी और टेक्स्ट मी और जस्ट रिप्लाई मी, ठीक है ना. अपना फाइल लेके, अपना फाइल का इमेज देके, तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. अगर कहीं पे छूट रहा है या फिर कहीं पे गलती हो रहा है या फिर कुछ पार्ट मिसिंग हो रहा है, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. Okay now. Okay, so thank you for watching, and this is my render output. This is a simple render output, nothing else. You can use your sampling. If you use high configuration machine, maybe you achieve a more better than me result. And this is what you can see. There's a 4 cores. There's only 4 cores over there. That's a 4 core rendering and all that. Low configuration machine, and this is the render output for my first render output. I think it's fine for me. Okay now. Thank you.